gentleman doesn't constitute Residicator. This gentleman doesn't constitute Residicator. 1 second. Yes. 1 second. This 1 gentleman is second. poet. Please listen to me. You are not, 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. Mr. Rodhi, sorry, no oral mentioning in my court. No, Clients will not tolerate this. You have to follow the rules in my court. But if you not, The whole world knew that this matter was being heard. I have Come no. back 1 second, Mr. Rodhi. You come here after the judgment is delivered. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जब एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को फिर एक बार एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर तो देने ही पड़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा कि जब हमने अपने जजमेंट में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी दीजिए, इसका मतलब था कि सारी जानकारी, इसका मतलब था कि जितनी भी जानकारी एसबीआई के पास मौजूद है, तो फिर क्यों एसबीआई के द्वारा बॉन्ड्स के नंबर नहीं दिए गए। एसबीआई जानकारी साझा करने के मामले में सिलेक्टिव ना रहे, हमारे किसी ऑर्डर का इंतजार ना करे। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड्स के नंबर देने में कोई परेशानी नहीं है, बॉन्ड्स के नंबर दे दिए जाएंगे। But I appear for the State Bank. Yes. Mr. Salve, in Yes. our order which we, in the judgment which we delivered, we had expressly asked State Bank of India to disclose all details. The language of the judgment was all details have to be disclosed. Therefore, that includes the bond numbers as well. So, But let SBI not be selective in the disclosure of details. We intend to clarify that it shall disclose all details, including the bond numbers, and every part of the information which is in its possession and custody. Don't wait for an order of the court. We banked on the fact that the State Bank of India would be candid and fair to the court. But I just, whatever your lordship say, if your lordship say bond numbers, you can disclose the bond number. There's no problem. Somebody can no question. SBI's attitude appears to be, you tell us to disclose a particular detail and we'll disclose it. That's not fair process. But how we understood. SBI requires, this is the judgment of the Supreme Court. As chairman of the State Bank of India, I'm duty bound to comply with the judgment. I will disclose every part of the information which is in my custody as directed by the Supreme Court. Because when we said all details of the purchases, that means every conceivable detail which is available with State Bank of India. And we clarified by saying including. That should be, I mean, State Bank of India has the best legal advice open to it. If the numbers are to be given, we'll give them. There's no problem. उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि गुरुवार 21 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी दे दीजिए और साथ में एक एफिडेविट भी दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि आपके द्वारा कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है। एफिडेविट इसलिए देने के लिए कहा गया क्योंकि अगर एफिडेविट देने के बाद भी कुछ छिपाया गया तो फिर बड़ा एक्शन होगा। अगर एफिडेविट में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो गलत जानकारी देने वाले के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाती है। Has merged with the final judgment. Your lordships, all details. That's why we came to my lord. Mr. Salve will clarify to put it beyond any. No problem. No problem at all. We'll say that now SBI will not only disclose the bond numbers, but it shall also file an affidavit again before our court saying that you have not suppressed any, you will not withhold any details in regard to this within the purview of clause B and C of para 221. Whatever my lord the Chief Justice is saying, your lordship will clarify. We will give every bit of information, relevant, not relevant. We'll give every bit of information which we have, so that my lord, there should be no feeling that SBI is interested in somehow holding something back. चीफ जस्टिस ने एसबीआई के साथ साथ फिक्की की वकील की भी क्लास लगा दी। फिक्की के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर हमने एप्लीकेशन लगाई है। इस पर सीजीआई ने कहा कि हमें आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं मिली। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर्स को लेकर एप्लीकेशन डाली है। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराज होते हुए कहा कि हम इस पर फैसला सुना चुके हैं, अब हम आपको नहीं सुन सकते। जस्टिस गवई इस पर कहते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि इस पर फैसला हो चुका है, जो नियम है वो सबके लिए है, हम आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं कर सकते। मुकुल रोहतगी के साथ ही मैथ्यू निगम्पारा भी बोलने लगे और जब वो बोलते बोलते चीफ जस्टिस से बहस करने लगे तो सीजीआई ने भरी अदालत में उनको ऐसी डांट लगा दी कि सीनियर से लेकर जूनियर वकील तक चुप्पी साधे बैठे रहे। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि क्या आपको कंटेम्प्ट का नोटिस चाहिए। मैथ्यू निगम्पारा को एक बार पहले भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिल चुका है। We have filed applications today morning
Lord, If the application is not numbered, it is not registered, we'll follow what sauce for the goose is sauce for the gander. Mr. Rodhi, sorry, no oral mentioning in my court. I'm not, Lord, I'm in the matter I'm saying. I am saying, We have no Lord, such application on board. Let it be circulated. We'll deal with it in the normal course. but Lord, I am respectfully submitting if your Sorry, lordship make appearing an for order big today. clients, we will not tolerate this. You have to follow the rules in my But court. Lord, if your lordship make an order today, my application will be infructuous. I am saying kindly defer the issue of grant of alphanumeric. Mr. Rodgi, you are aware about the proceedings going on. You could have intervened at that stage. What is this after the judgment is passed, you want to intervene now? No, Lord, the order is of 15th March. Ask No, me, but Lord, you are aware about the proceedings pending before this But court. Lord, we were Arguments not are going parties on anywhere. together. we were not parties at any time. Everybody, the whole world knew that this matter was being heard. Lord, I have Come no, back, 1 second, Mr. Rodgi. You come here after the judgment is delivered. You are now, you file an application. That's not the way. Lord, I have come only in regard to Circulate and- 15th March. Kindly appreciate. No, Mr. I have no problem in Rodgi, declaration hear you. of the list of donors Rodgi. or the list of recipients. Mr. Rodgi will not hear you right now. We have a specific application which is on board. You ask your advocate on record to follow the procedure. File an email. It will be dealt with by my registrar listing. We'll take a, we'll get But it. No. I am saying No. kindly, Lord, If I do it for Mr. Rohatgi, senior No, no, counsel, then Mr. Rohatgi, you look at me. As Chief Justice, I have no face to tell all the other juniors to whom I declined list mentioning in the morning. My lord, the entire, I have emailed entire judgment One has, second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Rohatgi, yes. no, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute justificator. This judgment doesn't constitute justificator. Mr. 1 second, Yes. 1 second. This 1 judgment is second. void. Please listen to me. You're It is- not, 1 second. I am a citizen of this 1 country. second. Yes. Don't shout at me. No, no, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rodgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, There's no question you've got. my friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have had whatever. enough. We heard that. Please, that's all. You made it. We are in a democracy. We will not hear you till you move, follow the procedure prescribed. जब सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने बेंच को रिव्यू के लिए दायर की गई याचिका पर उनका ध्यान दिलाया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने अध्यक्ष को सख्त लहजे में कहा कि आप एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आपको प्रोसेस भी पता है। आपने मुझे चिट्ठी भी लिखी। ये सब पब्लिसिटी के लिए है। इसे यही छोड़ते हैं। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। May I mention, my lord, my petition for suo motu that is pending. Whatever lordship want to do, that do only. I will not disturb lordship. Mr. Agarwala, apart from being a senior counsel, you're the president of the SCBA. Yeah. You know the procedure. You have written a letter to me asking me to invoke my suo motu jurisdiction. Yes, yes, my You lord. have no locus to mention So anything. that I should not You disturb have to lordship. restrict with what you We have should not waste it honorable time, court's time. Fair That's enough. why. Lord, Only that. These are all publicity oriented stunts. We will not permit it. Whatever Please, lordship feel better. Mr. Agarwala, please keep it at that. I may have to say something more, which will be perhaps a little distasteful. दरअसल आदिश अग्रवाल ने 14 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा था। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी। आदिश अग्रवाल का कहना था कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला चंदा इस तरह उजागर होने से उन कॉर्पोरेट्स पर प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने बॉन्ड्स के रूप में दान दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर 11 मार्च को हुई सुनवाई से अगले दिन यानी 12 मार्च को आदिश अग्रवाल ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को भी एक पत्र लिखा था। इसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत रोक लगाने की मांग की थी। आदिश अग्रवाल ने संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र करते हुए लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिसमें संवैधानिक गतिरोध पैदा हो, जिनसे भारतीय संसद की महिमा और उसके सदस्यों की सामूहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होती हो और राजनीतिक दलों की अपनी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो। आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से राजनीतिक पार्टियों, कॉर्पोरेट संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की थी।
लेकिन 13 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और सदस्यों ने खुद को इस पत्र से अलग कर लिया था और इस पत्र की निंदा भी की थी। निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को ऐसा कोई भी पत्र लिखने का अधिकार नहीं दिया है। ये पत्र ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के लेटर हेड पर लिखा गया और आदिश अग्रवाल ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिखा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति आदिश अग्रवाल के इस कदम और पत्र की सामग्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को कम करने के प्रयासों के तौर पर देखती है और स्पष्ट तौर पर इसकी निंदा करती है। तो सोमवार को तो चीफ जस्टिस इतने गुस्से में थे कि जो भी उनके सामने आया उन्होंने उसकी ही क्लास लगा दी। अब चीफ जस्टिस ने एसबीआई को 21 मार्च तक का समय दिया है। अब देखना यह है कि इस बार एसबीआई सारी डिटेल्स देता है या फिर इस बार भी डिटेल्स ना देनी पड़े इसलिए कोई नया पैतरा अपनाता है। ये तो 21 मार्च को ही पता चलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप इधर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।